Yes, definitely I would like to dedicate these two lines to our three friends. They are just like "तुमको जाना नहीं, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बहारे." Actually, I wish that these friends, as I dedicate these lines to my friends, nothing can harm them if they are right on their place, if they are true to their words. With the God grace, they can achieve the success. May God bless them. Thanks a lot, sir. I have selected one song and my dear listeners. Before this, my dearest students, first of all, best of luck to you all for the future. And I know you all are different. So many groups are there, so many categories are there. But really, you all are very good. Okay, and so I have selected one song for you. I'm just trying, okay, and just manage the things, because practicals and the theoretical things are different. Okay, in life, in the life or in this era, your things are different. So I'm just trying. Okay, I'm just trying. Okay, so song is कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ, करके दिखा कमाल वो आके पे देते जाए आसमां, शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ. Thank you. Thanks a lot, sir. I think it is very difficult question for me than a chemical reaction. But however, I would like to dedicate one of the songs for my dearest students of 12th class. मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी यादों के साए चुराए रसीली यादों ने. ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने. छोटी बातें छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरी राहों में. ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने, सपने सुरीले सपने. Thanks a lot, sir. I would like to dedicate especially the two lines. करके दिखा कमाल वो आके ज़मीन पे लेके जाए आसमां, शाबाशियाँ शाबाशियाँ. That's all I want to wish you all, that you all get all the success in life. God bless you. Thanks a lot, ma'am. So घड़ी बदल रही है, चाँद है कभी कभी ये धूप जिंदगी हर पल यहाँ, जियो जो है समा कल और रहो. Thanks a lot, ma'am. Then we asked about special nicknames they might have for you and the stories behind them. I think the best nickname I would suggest will be the Orions. You know, Orions, it's a constellation. Okay. They are
like these constellation who are the brightest, symbolizing guidance, leadership, passion, and competitiveness. They're the brightest constellation. So I would suggest that they're the Orions of our school. The Orions of our school. Thanks a lot, ma'am. It's a quite tough question you have asked me because it is very difficult to define them in one term because they are so versatile. But I will try. According to me, I'll like to give them the nickname Inquisitive Explorers. They are Inquisitive Explorers. That's quite interesting. Thanks a lot, ma'am. So it would be dynamos because they have been nothing but a sort of powerhouse. Their boundless energy and commitment have set them apart. Whether it was during sports day, science and art exhibition, and big winners, they have stood up perfectly. So go ahead, dynamos, and keep spreading your spark in the world. Thanks a lot, ma'am. Next up, because words of wisdom are always welcome, so we asked them to share some special messages for you, for your encouragement and wisdom. Sister, please describe this batch in 3 words. Dynamic and vibrant group. And also they are very talented persons. Thanks a lot, sister. Ma'am, if you had to define this batch in 1 word, what would it be? मददगार। Okay, thank you. मैं कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे आउटगोइंग बैच के लिए? सबसे पहले मैं आपको जीवन के इस नए अध्याय में प्रवेश करने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा, आपके अंदर आत्मविश्वास है, साहस है, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेगा। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे नंबर लेकर के पास हो, एक मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, ma'am. What is one unique quality you notice about this batch that stands out? They are actually very passionate and very competitive individual. I feel like this kind of competition that will take them to the next height. So I love their passion and their competition part. Thanks a lot, ma'am. Sir, if you had to describe this batch in 1 word or a sentence, what would it be? This is an extraordinary and incredible batch of 2024-25 of our school. Thanks a lot, sir. Ma'am, if you could suggest a laptop. Why a laptop? I mean to say, learn, adapt, persist, think, overcome, and progress. Okay, it was a tricky one. Thanks a lot, ma'am. Ma'am, what is the one thing you want them to always remember about their school life? इस बैच की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनमें समन्वय की भावना आपस में तालमेल से चलती है। मैं चाहूँगी कि ये अपनी जीवन में इसमें को सदा बनाए रखें। जहाँ भी जाए सबके साथ मिलकर आए। Again, we wanted to know if they could dedicate a movie to your class. What genre would it be, or perhaps even a specific film? Movie Student of the Year. So that's why I prepared to movie Student of the Year first. And everyone is good in this class, but if you want to live your life, that's so this generation and this movie is good for this batch. Thanks a lot, sir. They all dramatize each and everything, from even asking extra time for something to get an extra period, for an activity. They make all the cute expressions and excuse their faces. Nothing in drama I can decide for them. I can give it. Thank you, ma'am. This outgoing watchful movie, it would be a perfect blend of coming of age dramedy and a sports drama, a combination of heartfelt moments, personal growth, competitions, victories, failures and comebacks, a mixture of teamwork, leadership and final victory. Thank you, And ma'am. finally, because everything tastes better with a little love, we asked them to name each of you after a yummy food dish.
So let's see what heartwarming and humorous answers they gave us. These students like few of them are chilies and few of them are potatoes and few of them are vegetables. Thank you, sir. फूड स्पेशल थाली क्योंकि आप देख सकते हैं स्पेशल थाली में सलाद भी आ जाता है, दाल मखनी भी आ जाता है। तो इस क्लास में आपको सलाद भी देखने को मिलेगी, दाल मखनी भी देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो स्पेशल थाली में जितने सारे आइटम्स रहते हैं वो सब में आप इन सब में भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्पेशल थाली इसलिए स्पेशल Thanks a lot, sir. आलू गोभी हर चीज़ में काम आता है, हर जगह मिल जाते हैं और गोभी कहीं कहीं नज़र आते हैं लेकिन टेस्टी बहुत होती है। Thanks a lot, sir. अगर हम बात करें नहीं देना चाहूँगा क्योंकि फ्रूट इसमें जिस तरह से डिफरेंट आपके फ्रूट्स होते हैं और उनका डिफरेंट टेस्ट होता है और जो डिफरेंट टेस्ट होता है तो क्या है पर तो देखिए मिठास लेकिन उस सभी में अलग अलग है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन बच्चों को जो है अपने उसको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बिना मिठास के आप ये कुछ पढ़ नहीं सकते। जब आप किसी से मधुरवाणी में बोलेंगे और यही यहाँ पर सेंट जोसेफ इन बच्चों को सिखाया गया है कि आप एक अनुशासन बने, संशासन के साथ साथ आप अपने कैरेक्टर को, स्कूल को और अपने पेरेंट्स की जो फेथ है उसको आगे बढ़ा के अपनी उन्नति की तरफ चलें। Thanks a lot, sir. तो वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का और इस मौके पर एक शायरी शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे रिश्ते को बयां करती है। छोड़ चले जो रास्ते उनको राह दिखाई थी, सीखने की चाहत थी तो रोशनी बरसाई थी। छोड़ चले जो रास्ते उनको राह दिखाई थी, सीखने की चाहत थी तो रोशनी बरसाई थी। उड़ान भले ही ले चुके हो नए आसमां की, मगर ये याद रखना ये जमीन हमने बनाई थी। तो जाइए दुनिया फतेह करिए, पर ये याद रखिएगा ये प्यार हमेशा आपके साथ है।